पर, ग्लैंस लॉक स्क्रीन पर, ग्लैंस टीवी पर आपको ये शो अच्छी लगे। आपको बता दूं कि हम पूरे टूर्नामेंट पे यहाँ क्रिकेट को लेकर काफी चर्चा कर चुके हैं, काफी प्रिडिक्शंस कर चुके हैं। सम ऑफ आवर प्रिडिक्शंस, यानी कि मेरा एंड माय esteemed guests, some of the predictions have been spot on, some have been close, and some have been absolutely way off the mark. अफसोस की बात यह भी है दोस्तों कि आज हम भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगेन अफसोस की बात, टीम फाइनल तक नहीं पहुंची। दैट 10 विकेट हैमरिंग एट द हैंड्स ऑफ इंग्लैंड, और शायद से एट द हैंड्स ऑफ जॉस बटलर एंड एलेक्स हेल्स। आफ्टर दैट there's very little to discuss today, at least, because let's give full respect to the two teams जो आज इस मंच तक पहुंचे हैं, यानी कि बाबर आजम की पाकिस्तान टीम और जॉस बटलर की इंग्लैंड टीम। Joining me on T20 Adda once again is former India cricketer, former IPL cricketer Manvinder Bisla, as well as someone I've had the fortune of knowing for many years now, Nitin Sundar, a cricket writer. He's a podcast host, and he's someone who I interacted with as colleagues at Cricinfo many years ago, not to give away how old I am. So without any further ado, पहले हम लाते हैं मनविंदर बिस्ला को शो पे, and then very shortly नितिन सुंदर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जेमी। ऑब्वियसली लाइक जो हमें प्लान था हमारा कि फाइनल के अंदर इंडिया के बारे में बात करेंगे, वो सफल हो नहीं पाया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी मतलब अगर ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत काफ़ी बुरी तरीके से हम सेमीफाइनल मैच में नॉकआउट मैच में हारे हैं। और स्टिल आई थिंक जो हमें फाइनल मैच में ना इंडिया के बारे में बात करनी चाहिए थी, वो करने का मौका नहीं मिला है। वही हमने एक तो जो हमने सूर्या को लेकर जो हमने जिंक्स किया, व्हाट वी वर वर्ried अबाउट वही हुआ। आई पुट आउट दैट वीडियो अबाउट सूर्या। आपने पूरी कोशिश करी थी कि 50 मिनट तक सूर्या का नाम ना ले। इट डिड कम आउट ट्वाइस एंड हु नोस क्या है, बट लुक, आई एम वेयरिंग ब्लैक। क्या करें, मन थोड़ा इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए था। बट लाइक आई सेड राइट नाउ बिफोर यू जॉइंड, फुल रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड, फुल रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। वो दोनों टीम्स यहाँ पे आए हैं, we'll talk about them. I'm going to bring on Nitin Sundar for the first time on this glad show as well. इनका स्वागत करते हैं। हेलो Hi, नितिन। hi Jamie. Hello, Mr. Bisla. As a big CSK fan, I must say I still carry scars of 2012. But great to be on the same show as you. नितिन, Great to इट be वाज अ here. लॉन्ग टाइम बैक। Yeah, well, cricket fans tend to have a very long memory. We still remember 1992 going into today. So there you go. And we'll talk about this. We'll talk about this 1992 two factor as well. I'm gonna first put up some AVs here of these two teams here, because I mean, after all, this win. We were just talking about this, Nitin, before you joined. How Manvinder and I and Saurabh had planned to talk a lot about India, but unfortunately नहीं हुआ। Manvinder, ये जो 10 विकेट से धोया इंग्लैंड टीम ने इंडिया को, आफ्टर दैट व्हाट वुड द मूड बी लाइक इन द ड्रेसिंग रूम? बिकॉज एक होती है जीत और एक होती है 10 विकेट से 16 ओवर के अंदर 170 रन्स। व्हाट कॉन्फिडेंस वुड दैट टीम हैव टेकन फ्रॉम दैट विन, मनविंदर? ऑब्वियसली लाइक अगर आप इंग्लैंड टीम की बात करते हैं ना, जब आप इतने बड़े मार्जिन से और एक सेमीफाइनल मैच में आप जीतते हैं, तो पूरी टीम का यू कैन से कि नहीं यार, आज पूरी टीम ने जो करना चाहते थे ना, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि आप 170 का टारगेट, अगर आप 10 विकेट से मतलब एक भी विकेट आपने नहीं खोया है, एंड आप रन रेट भी देखेंगे तो कभी भी है ना, वो उन्होंने डोमिनेट किया इस मैच को। जब स्पेशली अगर सेकंड इनिंग में आप देखते हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो जीत गए हैं, उन्होंने पूरा डोमिनेट किया है। 16 ओवर में 170 बनाना कोई मतलब इट्स नॉट अ जोक। इसके लिए आपको बहुत एबिलिटी चाहिए, आपके अंदर बहुत फायर पावर चाहिए। ऑब्वियसली हमने लगातार बात भी करी थी मैच से पहले कि बटलर इस सीज़न में इतने उस रंग में नहीं दिखे थे, बट जैसे ही नॉकआउट मुकाबला है, क्रूशल मैच आया, लीडर है इस टीम की, एंड व्हाट अ टर्न अराउंड बाय हिम। अगर आप देखते हैं कि जो लीडरशिप की बात हम रोहित के लिए कर रहे थे कि एज ए बैटर फर्स्ट देन ही इज़ ए कैप्टन ऑफ द टीम, बट अगर आप इस मैच में देखते हैं वो काम बटलर ने किया। बट अनफॉर्चुनेटली रोहित वो काम जिससे उम्मीद कर रहे थे सारे इंडियन फैंस, पूरी इंडियन टीम, आपका ड्रेसिंग रूम में जो बाकी प्लेयर्स थे, वो अनफॉर्चुनेटली रोहित उस मैच में नहीं कर पाए। I'll just come to you, Nitin. First, I'm going to put up a poll for our viewers here. Doston, as usual, you have 20 seconds to cast your votes. I'm going to put the first question here. It is, are England's openers the potential differentiators? You have 20 seconds to cast your votes, yes and no. आपको बता दूं, viewers, कि as good as this pair has been, they've not played Shaheen Afridi the whole tournament, and the same Shaheen Afridi पावर प्ले के अंदर 5 विकेट ले चुके हैं
कुछ 11.4 के average. So while the viewers cast their votes, Nitin, how do you view exactly what Manvinder just said? On the one hand, you had a team which I said this before, arguably they got to the semifinals without having that typically dominant England match, which we saw finally. But someone like Alex Hales, his redemption, we all know Morgan kept him out for a long time. But lo and behold, the moment that Morgan retires and Butler's given the captaincy, it's a matter of weeks before the team finds some way to get Hales back. How big a factor, how big a redemption story would it be for Hales if he succeeds in the very country where he arguably earned his name for 4 years playing the BBL? I think massive for Alex Hales, right? First, to respond to your first question, right, that England didn't have the typical campaign. It wasn't the typical campaign. If you actually go back to the 2019 World Cup that they won, they had a very bad campaign there as well. They lost three games, and some would say they did not win the final either. If you look at what happened this time in 2022, right? Yes, not the typical campaign, lost to Ireland, reminded us of 2011 and all of that. They had one perfect game, I would say. I think the defeat of New Zealand was, proper England, right? You could see they got everything right in that game. So you could see they were coming into their own. As far as Alex Hales is concerned, right? Like so many things had to go right for Hales to come back into the team. A, like you said, Owen Morgan leaving the scene was important. Johnny Basto's injury suddenly opening up a slot right at the top, and the fact that Hales literally has spent his last 5 years preparing for this World Cup, playing the Big Correct, Bash correct. League. And everything came together, and after that game, he actually said it also, right? He said this is Adelaide is amongst the best grounds in the world for batting in the power play. That was local knowledge speaking, which unfortunately Rohit Sharma and KL Rahul did not have, and they were playing tuk tuk in the power play, and you had Alex Hales going after the bowling, and that's where England won the game. Yeah, it'll be great redemption story, but yeah, let's see what happens. It'll be great if Hales can finish it off in style today. I mean, he's done the job so much. और ये जो कुदरत का निजाम की बात है, this could be applicable to someone like Alex Hales as well. But let's quickly shift into the Pakistan side of things because no matter how we look at this tournament और ये जो भी होता है आज या कल अगर बारिश होती है, so much has been about how Pakistan have made this backdoor entry. आप दोनों से ये पूछना चाहूंगा कि ये Kudrat ka Nizam, the force of nature, which Saklain Mushtaq spoke about, this almost Undertaker level of a resurrection, if you use a WWE. How do you both view this? I'll start with you, Maninder. नहीं, आई थिंक कि अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, फर्स्ट 2 मैचेस इतने अच्छे नहीं थे, दोनों मैचेस हार गए। इवन अगर आप इंडिया वाला मैच देखते हैं, तो इट्स सॉर्ट ऑफ ब्रिलियंस ऑफ विराट कोहली। अदरवाइज़ अगर आप पूरे मैच में देखेंगे तो पाकिस्तान का अपर हैंड ही था। अगर आप सेकंड इनिंग जब इंडियन टीम ने बैटिंग करनी स्टार्ट करी, तो वो शुरू से ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान टीम ये शायद मैच जीत जाएगी और जीत जाएगी, बड़े मार्जिन से जीत जाएगी। बट सडनली एक विराट कोहली के ब्रिलियंस कह लीजिए या उनका एक्सपीरियंस कह लीजिए, इस वजह से वो मैच जीते। सेकंड जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। अदरवाइज आप उसके बाद टूर्नामेंट देखेंगे ना, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा मैच जीते, क्योंकि वो वहाँ से टर्न अराउंड हुआ। अगर वो मैच ये हार जाते तो टूर्नामेंट सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी नहीं करते। वहाँ पे जो इनके पास एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, शादाब का जो परफॉर्मेंस था, शाहीन शाह अफरीदी, जो टूर्नामेंट में स्लो स्टार्ट थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम से खेल नहीं रहे थे, इंजरी से निकले थे, और उसके बाद सडनली वो अपना रिदम पकड़ते हुए, और अब व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर हिम। अगर आप देखते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर जैसे जैसे वो पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते रहे हैं, और लगातार ये बातचीत भी हुई है कि ये वर्ल्ड कप थोड़ा सा बॉलर्स का ज़्यादा रहा है, बॉलर्स फ्रेंडली रहा है, और वही चीज़ वो करते हुए कि पावर प्ले में विकेट लाते हैं तो बाकी बॉलर्स के लिए आसान काम हो जाता है। अगर फिर मैं वापस सॉरी अगर इंडिया पे आता हूँ, अगर नहीं, बेशक से 170 दिखता है, अगर वही पावर प्ले में 2-3 विकेट्स लिए होते तो 170 आपको बहुत, यही टारगेट बहुत मुश्किल लगता है। सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाज वी डिडंट पिक विकेट्स विद द न्यू बॉल, इसलिए वो जो टारगेट है वो इतना ईजी होने लग गया। तो वहीं अगर आप पाकिस्तान की साइड की बात करते हैं, वर्ल्ड कप से पहले बात होती है कि सिर्फ ओपनिंग बैटर्स हैं, उसके बाद कोई बैट्समैन है नहीं, लेकिन शुरू के आप अर्ली राउंड्स में देखेंगे दोनों ओपनिंग बैट्समैन कुछ भी नहीं कर रहे। वो बाकी मिडिल ऑर्डर ने, लोअर मिडिल ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया, उस सेमीफाइनल तक मुकाबले में पहुंचाया। देन क्रूशियल मैच में दोनों ओपनर्स फॉर्म में वापस आए और एक बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करी। तो मुझे नहीं लगता कि कि किसी और कोई फैक्टर है कि जिस वजह से सेमीफाइनल पहुंचे हैं। आई थिंक दे प्लेड क्वालिटी क्रिकेट, दैट्स व्हाई दे आर इन द सेमीफाइनल्स राइट नाउ। And a very valid point you raise about Shaheen because अगर आप इंडियन फैन हो तो आपको याद है कि 12 महीने पहले what Shaheen Shahbridi, what imprint he left on the psyche of not just fans but on Virat Kohli's team. It seemed like they sort of walk like zombies, Nitin, for the rest of that tournament. But like Maninder rightly said, he came back after all that injury, rumors about him paying his own way to London for rehab surgery. एक तरफ वो, but the guy has actually gotten better by
each match. Do you think this actually is something like what Sucklane said, or it's just come down to some good moves tactically, a bit of jack? Like I will keep reminding fans, South Africa, jo jack diya is team ko, that's been a big factor. But all jokes aside, this team has just got better and better, especially after a loss to India and then to Zimbabwe. Absolutely. In fact, they should have won that game against India, right? It was a freak innings from Kohli made India win that game. It flatters India's campaign as much as it made Pakistan's passage to the semi-final tough. The loss against Zimbabwe, right? At the end of that, there is this TV show. I don't know if you've been seeing clips, right? TV show that's happening in Pakistan. It features Wasim Akram, Misbah ul Haq, Shoaib Malik, all the former captains. It's a very fun show, and they were all of them were uniformly angry with the way their team had performed, right? And you had Shoaib Akhtar on YouTube, like giving them galis left, right, and center. Also, They had they were done at that point, right? That somebody did the math modeling and said they have a 3% chance of making the semifinal at that point, right? And then they needed what Zimbabwe to beat Bangladesh to keep that mathematical chance alive. And that game went to the last ball. The stumping, the thing happened. They had to replay the last ball. Every small little thing that had to fall in place for somehow Pakistan to make their way to the final just seemed to keep happening. Of course, with Roelof van der Merwe in the end, Netherlands pulling it off against South Africa. On the side, yes, absolutely. This is a very typically Pakistani campaign. They start off without knowing what their typical combination is. They keep getting better as the tournament progresses. I'm reminded of 2017 Champions Trophy. If you remember that tournament, they lost the first game against India. They were completely outplayed by India. They didn't have the right 11 in place, etc. Right? Imad Wasim was struggling. It is very similar to what has happened in this season. Right? Players have come into their own. Shadab Khan has come into his own. Shaheen Shah Afridi has gotten better. I think yeah, everything has fallen into place. All that's left now is for Babar Azam to announce that he's opening a hospital and to become the prime minister in 30 years from now. I was wondering when that 1992 reference would pop up. It's going to come in before I get to the next section, which actually does deal with this. I'm going to put up another poll for our viewers. आपके पास 20 seconds है to cast your votes. Is Pakistan the most dangerous team in the tournament, given all that Manvinder and Nitin have just very, very accurately put out there? Guys, you have 20 seconds. And I think I इट्स अनडिनाइबल नितिन के वो शेड्स ऑफ 92 तो बिल्कुल हैं ऑस्ट्रेलिया है 30 साल हो चुके हैं ऑल दैट वेंट ऑन विद दैट कैंपेन देयर एंड इवन देन इमरान खान का फॉर्म कुछ अच्छा नहीं था ही वाज गोइंग थ्रू हिज ओन प्रॉब्लम बट वन बाय वन things came together. Inzamam ul Haq stood up in that semi-final. We've had a Mohammad Haris. चलिए Haris has not done what Inzamam did, but उन्होंने ऐसी पारी खेली है 3-4 strike rate is 170 and he's just coming around and shocking them. So who knows? I just hope कि बारिश ना हो और आज even if it spills over to tomorrow we do get a final because it's deserving for both the teams. Poll के मुताबिक 44 are saying yes and 56 are saying no. If you think there's a more dangerous team, I want to know who it is. शायद आपको लगता है कि England is the other dangerous team. But picking up on what Nitin just said about 1992, let's move into our first segment here called Total Recall. Maninder, आप तो इस फॉर्मेट से वाकिफ हैं. Nitin, just to bring you up to speed, like the name suggests, I asked my guests either their earliest memory of इन दोनों teams के बीच कोई मुकाबला या of the most abiding memory. At least since you brought it up, 1992 के parallels तो बहुत हैं. मनिंदर, आपको लगता है कि उस लेवल का आज मुकाबला हो सकता है because it's a fantastic bowling attack against some outrageous hitting. Venue भी वही है जो 30 साल पहले था MCG. How do you see this match shaping up, or do you think it's going to come down to something which is unpredictable, unfathomable, incoherent? नहीं, आई थिंक अगर ये मैच फुल होगा, अगर बारिश इसमें इंटरप्ट नहीं करती है, इफ वी गेट ए फुल मैच, तो मुझे लगता है काफ़ी क्लोज होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी, एक साइड बहुत ही स्ट्रांग बॉलिंग है तो एक साइड बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग है. ऑब्वियसली अगर आप दोनों इंग्लैंड की बॉलिंग देखते हैं और पाकिस्तान की बैटिंग देखते हैं तो थोड़ा सा कुछ आपको लगता है कुछ भी हो सकता है. बट अगर पाकिस्तान बॉलिंग एंड इंग्लैंड बैटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो अगर दोनों ही चीज़ों की है ना, मतलब महारत हासिल है दोनों चीज़ों में, तो वो जो कंपटीशन होगा ना, पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंग्लैंड बैटिंग, तो वो जो भी जीतेगा वो उसको आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा. नॉर्मल सी वहाँ चीज़ चल नहीं पाएगी,
क्योंकि या तो वहाँ पे एक आपको ऐसे स्पेल्स देखने को मिलेंगे कि इंग्लैंड बिल्कुल वहाँ पे वो बैटर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, या इंग्लैंड बैटर्स के पास वो आई थिंक वो एबिलिटी भी है कि वो काउंटर अटैक कर सकते हैं और इस बॉलिंग अटैक को हिला भी सकते हैं, क्योंकि दे नो कि हाउ टू प्ले इन सीमिंग कंडीशंस, पेस को बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही क्लोज मैच होगा और होना भी चाहिए। जब वर्ल्ड कप का फाइनल आप देख रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि यार वो है ना, मैच ज़बरदस्त होना चाहिए, जीते कोई भी हारे कोई भी, लेकिन वो चाहते हैं कि लास्ट ओवर तक वो मैच जाए, ताकि कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है, क्योंकि दो इस पूरे वर्ल्ड कप की दो बेस्ट टीम फाइनल में पहुंची हैं, या अच्छी अच्छी टीम्स को हरा के पहुंची हैं। अब जो अब आप ये नहीं कह सकते ये हुआ वो हुआ, दो अब आई फील कि दोनों जो बेस्ट टीम्स हैं वो फाइनल में पहुंच गई हैं, एंड जो आज फाइनल के मैच खेले वो जीते। Nitin, I'll just come to you. There was a question from a viewer saying, match किस time है? Those match 1:30 1:30 Indian Standard Time. You can watch the final. Nitin, do you think at some point of this England innings, whenever they're batting, Babar might think, यार चलो मैं शाहीन को एक ओवर देता हूँ, शायद Lamb or Lewis की तरह something happens here as well. Maybe he gets a Livingston or a Brook. Who knows, right? The moment you put up Wasim Akram's picture, I knew that you're going to bring this up, right? Tall, young left arm fast bowler, arguably amongst the best left arm seamers in the world, has been getting better through the tournament, and is yeah, I'm waiting for that dream over in the middle overs from Shaheen, and who knows, yeah, Harry Brook and Liam Livingston would be very nice wickets to pick right in the middle overs. Yeah, it could break open the game. And that's it. There's इतने matchups हैं इस match के अंदर, which I'm going to bring us into our next segment, which is called numbers game. I'll just bring this up for you, because what we've just spoken about, there are n number of matchups which could decide this match. I have done, Nitin, I have done what Saurabh Pant wanted me to do for like 10 shows now. I've got the wrong AV up. He said, एक बार sometime in this show, you're going to bring the wrong AV up. And I finally do it on the final day when Saurabh Pant is not here. There's so many AVs. Anyways, I'm going to read out some pretty key stats to my mind, and I'll get both your views. Babar Azam, who struggled all the way until the semi-final, versus Adil Rashid, who was not taking wickets, but he was economical. Then in the semi-final, he got the biggest wicket of all. उनके सामने बाबर 3 बार dismiss हो चुके हैं राशिद के. He's only scored 77 runs off 61 balls at a strike rate. The word strike rate is bandied about so much when it comes to openers to this tournament. At 126.22, he struggled throughout his career to pick Rashid's googlies, and overall against leg spin, Babar strikes at 113.69. इसी बात पे Maninder, how crucial do you see someone like Adil Rashid as well also as someone like a Shadab Khan? हमने शादाब खान के बारे में काफी बात किया है यहाँ पे. Babar, we know the matchup between Babar Azam and Adil Rashid, but more vital, and you said last match कि आप कितने बड़े fan हैं शादाब खान के. There are several England players also who struggle against leg spin. Pace एक तरफ, आपने कहा था last match में, put their four fast bowlers to one side, जो impact someone like a Shadab Khan has. Do you think? Because in many ways you can argue कि ये इनका man of the tournament रह चुके हैं Shadab Khan. Another big day, just given how pivotal he's been, Manvinder. जी बिल्कुल, अगर आप शादाब की बात करते हैं ना, मतलब ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर। अगर आप मैचेस की बात करें, जहाँ-जहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ-जहाँ वो प्रेशर फ़ील करते हैं पाकिस्तान की टीम, ये खिलाड़ी ऐसे आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, कि हमेशा बात होती है पाकिस्तान पेस अटैक के बारे में, लेकिन स्पिनर्स के बारे में इतनी बात नहीं करते। लेकिन ये अपना गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं, रोल को बहुत अच्छे से समझते हैं, कि नो कि जैसे 6 ओवर्स कंप्लीट हो गए, इनका रोल स्टार्ट हो जाएगा। देन मिडल ओवर्स को टाइट रखना, मिडल ओवर्स में टाइट रखना, विकेट्स भी लेते हैं और टाइट भी रखते हैं। वहीं अगर Yep. आप इंग्लैंड में एक देखते हैं ना आदिल रशीद को, वो सिर्फ इस वर्ल्ड कप में उनका रोल रहा है टाइट रखने का, जो कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। लेकिन शादाब ने वो टाइट भी रखा है और विकेट्स भी दिला के दिए हैं। और साथ में फिर जो बैटिंग का रोल है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि 3-4 साल पहले वो इस टीम के अंदर मोर ऑफ अ लेग स्पिनर खेल रहे थे, बट अब वो मोर एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। वो बैटिंग में जब ज़रूरत है, हाई प्रेशर गेम में, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो आगे जो 20-30 रन एक्स्ट्रा बने थे, मुझे लगता है उसमें शादाब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। स्पेशली, और जो जिस तरीके से वो ग्राउंड में मूव करते हैं ना, आपको उनकी वो देख के लगता है कि ना इज़ अ बिग मैच प्लेयर, कि जैसे ही पिछले मैच में आप रनआउट भी देख लीजिए। अगर आप Correct hit, फर्स्ट जो आपको रनआउट मिला वो शादाब खान ने किया। जो मैं पिछले बार भी जब शादाब के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ये कहा था कि वो एक डायमेंशन नहीं है, जो एक बार बहुत साल पहले
इंडियन सेलेक्टर्स ने कहा था 3 डायमेंशनल प्लेयर के लिए, तो ये शादाब वो चीज़ हैं। हार्दिक पांड्या जो इंडियन टीम के लिए हैं, शादाब वही चीज़ उनके लिए है। फील्डिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट खराब भी हुआ तो ये ऐसे प्लेयर हैं कि बाकी 2 डिपार्टमेंट से अच्छा करके अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं। Nitin, before I come to you, we've actually got an early toss result has come in. England are unchanged. They won the toss. They're going to bowl. Pakistan be unchanged. I don't think there's any surprises there. I'm going to quickly put up a poll for our viewers here because the toss has caught us a bit by surprise. Question for our viewers here is how many runs will Pakistan make? 150 से कम या 170 और 180 के बीच? I'll come to the toss in a while, but I want to pick up the same topic we were talking about numbers game, Nitin. Shadab, the batsman, has also been not as good as Shadab, the bowler, but we've seen throughout the year that Pakistan, beyond the openers, they've not had a fixed 3, 4, 5, or 6. Kabhi Shadab 4 pe aa chuke hain. It's a role where he plays even for in the PSL. He often bats at 3. Whenever they've given him a chance, it's actually paid off more often than not. It's failed. That match against South Africa, right? Keeping in mind again that Adil Rashid factor that I was talking about, Shadab strikes at about 145 against leg spinners this year. Is there a case to once again throw the template book to the side and say, agar situation demand karta hai, send in Shadab the batsman at 4? Very possible, right? It's again a typically Pakistani thing if they do something today that they've never done so far. If you remember, before this World Cup, Ramiz Raja had scheduled a 7-match T20 series between England and Pakistan. It was Yes. a series that just went on forever. And वो भी 3D जैसा है, by the way, because Ramiz knew before all of us that यही final होगा, so he simulated the final 7 times, right, to prepare the two teams. Even in that series, right, Shadab was not promoted at all. I think Shadab only faced like 10 balls, 15. I don't remember the exact stats. And even against South Africa, right, though he got a long innings, he got that because they were 40 for 4, right? He didn't come in earlier or anything of that sort. So it'll be the typical Pakistani thing to do if they throw the form book out and say, "Chalo, aaj Shadab ka din hai," and send him up there, right? Yeah. And that's the thing because I think, gentlemen, the way that West Indies selected those two World Cup winning squads based on data actually does not get enough credit. कि मतलब एवन लुइस अगर डोमेस्टिक में सीपीएल में उस लेवल का स्ट्राइक रेट मारता है तो we need to get these kind of players in. Despite the unpredictability, the Kudrat का nizam, all these things about Pakistan, I was reading that Shadab is actually a very data-driven type player. So while it might seem like किसी guesswork, yeah, tukka, whatever it is. There's actually a science to behind what Shadab does. And the guy's taken some 12 wickets so far. Batting we've seen. So you never know. These kind of tactics do often have a way of working out. There was one more stat that I wanted to bring out for you guys. It could be an area, Maninder, जहां पे ये match actually decide हो. Death overs, मैं इन दोनों टीम के आंकड़े देख रहा था. Pakistan, Maninder, have scored at 9.63 in the slog overs, जो कि Super 12 teams को लेके it's the third best, whereas England are at fifth with 7.93. शायद Maninder ये एक एरिया है जहां आज का मैच डिसाइड हो सकता है. Slog overs batting. बिल्कुल होता है। अगर आप दोनों ही टीमों के देखेंगे, आप इंग्लैंड में देखते हैं ब्रूक्स, लिविंगस्टन, इवन अगर स्टोक्स टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, तो इंग्लैंड के पास वो फायर पावर है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो फायर पावर ने फायर लगाई नहीं है। पावर Yes. ज़रूर है, वो ड्रेसिंग रूम में ही रह गई है, लेकिन वो ग्राउंड में आके आग लगी नहीं है। और मुझे लगता है कि कभी-कभार जैसे इंग्लैंड ओपनर्स की बात हो रही थी सेमीफाइनल मैच में, सडनली नॉकआउट में दे वर डूइंग देयर बेस्ट, तो ऐसे अब वो एबिलिटी इनके पास है, क्योंकि वो और ब्रूक्स का अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था। ऑब्वियसली वो मैचेस पाकिस्तान में खेले गए थे, डिफरेंट विकेट्स पे Yes. आप खेल रहे हैं, लेकिन ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर हु कैन फिनिश द इनिंग्स वेरी वेल। तो मुझे लगता है वो फायर पावर इनके पास है। वहीं अगर आप पाकिस्तान की टीम देखते हैं, पाकिस्तान के शादाब हो गए, तो प्लेयर्स उनके पास भी मौजूद हैं। नवाज बहुत अच्छी फिनिशिंग कर रहे हैं उनके लिए। इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा बेनिफिट डाउट डाउट मैं बेनिफिट इसलिए देना चाहूँगा पाकिस्तान की, पाकिस्तान में क्वालिटी बॉलर्स हैं जो इंग्लैंड को रोक सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे इंग्लैंड के पास वो वुड नहीं है, सैम करन ज़रूर है, बट सैम करन के पास वो वेरिएशन है, बट एक्सट्रीम पेस नहीं है। वुड की मुझे लगता है कमी थोड़ी सी खलेगी इस मैच के अंदर। आप सैम करन को देखते हैं, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं जॉर्डन गेंदबाजी करेंगे। जॉर्डन पिछला मैच खेले थे, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं आए हैं। तो मुझे Correct. लगता है इसलिए पाकिस्तान को बॉलिंग की डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग है ना, तो मुझे लगता है कि शायद से वो इंग्लैंड के बैटर्स को थोड़ा सा काबू में कर सकें, कंट्रोल कर सकें। बट अगर आप स्टैट्स के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है कि दोनों टीमों के पास वो ज़बरदस्त फायर पावर है कि वो कभी भी वो बम फट सकता है और किसी टीम को गिरा सकता है। कभी भी बम पड़ सकता है.
Good point. Nitin, you've written a lot on cricket. I know I worked with you. You host a fan or you co-host a fantastic podcast. At what point of cricket do you somehow think, yeah, chalo, logic, stats, ek taraf, just go with, I'm not gonna say momentum, I think that's a cliched word, but you just go with the good vibes, jo chal raha hai. Do you think either of these teams would perhaps break from template? या नहीं, जो हमें यहाँ तक लेके आया है, we're just gonna stick to that. I think England will stick to the template, right? Ah, You could even sense that in the way they played against India, right? Every single over was well planned. The length that every bowler was bowling, they just knew that round. They knew what they need to know. The way Adil bowled in the power play, as opposed to how he yes. bowled after the power play, every single thing, right? Pakistan, I don't think has a template, so there is no template for them to, let go of. If I were to, it's cliched, but if I were to come up with one phrase to describe today's final, it would be nature versus nurture, right? Going Mm, back to the whole Kudrat ka Nizam point that Sakleen mentioned, Pakistan to pura nature hai, feels hai, vibes hai, things have, and things whatever happens, they go with the flow, right? This team has literally grown and evolved through the course of this tournament and found its best players. England are the exact opposite, right? I think Matthew Mott is one of the people in the coaching staff, very, very analytical person. They have players for every role, batting all the way up to 11, 8 bowling options, whatever. So for me, yeah, it is the most data-driven analytical team in the fray. Lots of people say, right, about 2016, 2012, ka West Indies was the first evolution of T20, and then they've sort of gone into decline. I've been thinking about it. I actually don't think this current England team is very different from that West Indian team because it's pretty much the same template, right? You have hitters all the way down, you have as many bowling options as you want, and you over index on batting at the cost maybe of having one or two incisive bowlers, right? They have Chris Jordan, for instance, who's an all-rounder. They have Sam Curran bowling at the death. Neither of these are, specialist death bowlers, but they are all-rounders, and the value that they bring is with the bat as well as with the ball. That's exactly what West Indies did as well, right, back in 2016. So I would say this is more carry forward of the same sort of logic to T20 cricket, but when you're going up against nature, right? I remember on some Pakistan space they mentioned Mohammad Haris, right, who has come out of nowhere suddenly and become a factor in the end stages of this World Cup. He's like the Inzamam equivalent of 1992, right? The term is Patla Dubla Ladka from Banwe, right? So इंतजाम that's बहुत Mohammad कम Haris. समय के लिए पतले दुबले थे. काफी So you काफी know पतला where Mohammad दुबला. Haris is going to go next, right? Oh yeah. Correct, correct. And by the way, things are happening. You mentioned that England have chosen to bowl, which means they will be Yes. chasing. That middle overs from Shaheen Shah Afridi is coming, right? It's everything is falling in place. So yeah. Never know. Well said. Maninder, Like, नितिन एक I feel अच्छी I बात feel की. शाहीन का फर्स्ट स्पेल इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इंग्लैंड Yes. के बैटर्स ने फर्स्ट स्पेल शाहीन शाह अफरीदी का निकाल लिया, ज़्यादा विकेट्स नहीं दिए, आई थिंक इंग्लैंड के लिए काफ़ी अच्छा वो ही हो जाएगा. चेस काफ़ी Absolutely. बेटर करेंगे वो लोग. वही है, लाइक आई वाज सेइंग, शाहीन ने पावर प्ले के अंदर कुछ 5 विकेट लिए, 11 रन के एवरेज पे. इट डज कम डाउन टू दैट. पर विंदर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, नितिन जस्ट यूज द वर्ड नर्चर एंड ही मेंशन अबाउट हाउ क्लिनिकल दैट इंग्लैंड टीम वाज इन द फाइनल. आपको क्या लगता है मनविंदर, ये जो एक जीत थी, 10 विकेट से आप हारते तो इट्स अ मैसिव विन, बट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज इन. अगर हम एक बार फिर से शो पे इंडिया वाले मैच पे जाएं, was this a win achieved actually in the back room first and then on the field, given all the planning that went into that match? क्योंकि जैसे नितिन ने कहा था, ये बहुत ही क्लिनिकल विन था. आई फील जब स्पेशली जैसे अब टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप, आप वर्ल्ड कप मैचेस में इतनी कन्विंसिंग विन करते हैं, जीतते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ना, जो वो स्टार्ट एक दो महीने पहले नहीं होती हैं, वो कई साल पहले चीज़ें स्टार्ट होती हैं. आई थिंक इट स्टार्टेड इन द अंडर द लीडरशिप ऑफ मॉर्गन कि हम क्या किस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे, किस क्या ब्रांड की हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फेयरलेस खेलना चाहते हैं, और यू वांट टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट. अगर आप वो देखेंगे ना, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे वो फेयरलेस के लिए मतलब जाने जाते थे. जेसन रॉय को देख लीजिए. आई थिंक इट स्टार्टेड विद जेसन रॉय कि नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट 6 ओवर्स मारो, देखी जाएगी, वो प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर बनाओ सब. और ऐसे प्लेयर्स को बैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 10 में से ना 4-5 मैचें बनाएंगे, बट वो 5 मैचेस में आपके लिए ऐसा इतना अच्छा स्टार्ट दे देंगे आपको कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा मैच जीतना. तो अभी आप वही देखते हैं कि जो इंग्लैंड टीम है, आई थिंक इट्स दे आर क्वाइट फियरलेस, क्योंकि उसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद दैट. वही प्लेयर्स हैं जो उन प्लेयर्स, नए प्लेयर्स को बैक करना, ऐसे जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी बार आप बहुत ही नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, बहुत ही ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव इंटेंट है, आप
वो मैच जीतने को देख रहे हैं, एक अच्छी क्रिकेट खेलने को देख रहे हैं। अगर टी20 में आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के खेलने की कोशिश करेंगे ना, कि पहले 10 बॉल खेलते हैं फिर देखेंगे, जो कि इंडियन टीम के साथ हुआ Yeah. इन ऑल द मैचेस। अगर पावर प्ले को उठाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स पे खेलें, स्टिल द पावर प्ले वॉज नॉट गुड फॉर द इंडियन टीम। तो वही चीज़ अगर आप इंग्लैंड के लिए देखते हैं, तो जब अगर उनके कोई बैटर्स को स्टार्ट मिली है, तो इट्स लाइक एक्सप्लोसिव स्टार्ट। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो 10 बॉल में जाके 2 रन बना रहे हैं उसके बाद देखेंगे। तो इट्स राइट फ्रॉम द वर्ड गो, दे नो व्हाट इज देयर गेम प्लान एंड उसको करना ही करना है। इट्स नॉट लाइक नॉट गोइंग बैक, कि आप वापस जाके कुछ और चेंज कर सकते हैं। आपके पास उस टाइम बैट है, पावर प्ले में आपके वो एक टीम ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, पावर प्ले में हमें फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है और उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। तो वही टीम इस चीज़ को करती हुई आ रही है, और ये मुझे लगता है कि वो ये 1-2 साल से नहीं हुई है। आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7-8 ईयर्स दे आर प्लेइंग दिस काइंड ऑफ क्रिकेट। शुरू में 2-3 साल आप देखेंगे ना, इंग्लैंड टीम वाइट बॉल क्रिकेट में अंडर द लीडरशिप ऑफ मॉर्गन, दे वर वेरी ऑर्डनरी। बहुत ज़्यादा कोलैप्सेस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो धीरे धीरे करके जब उनका स्टार्ट हुआ ना, कि कोई बात नहीं, तुम 350 बनाओ, हम देखते हैं, तो वो चीज़ स्टार्ट हुई। और आई थिंक जो उसके फ्रूट्स हैं वो लगातार आपको 3-4 साल से दिख रहे हैं, कि आईसीसी वर्ल्ड कप में वाइट बॉल क्रिकेट में लगातार ये कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। No, it's a very valid point because Owen Morgan was actually Nitin the captain of that 2015 one day, but somehow in this shrinking collective memory, people say, "अरे वो तो उसके बाद आया था." नहीं, actually was the captain, but no doubt what Morgan experienced in Australia and New Zealand across those 5 weeks. Somehow it was that tour or that World Cup when he realized, "Okay, boss, I have been given a KRA by the ECB, and that KRA is win us at least one World Cup." So definitely, while the start was rocky, 2015, I think they played a bilateral series against New Zealand, and it was in that series that we saw, 320, 340, 370. This team 400. believes Yeah. exactly. So they believe that we will make 400, but then also if we concede 400, then we will bloody well get 401 as well. Yeah, and let's not forget that they came within what 1 over of winning the 2016 T20 World Cup as well, Correct, right? We all correct. forget. We only remember Brathwaite, but England played really well in that World Cup. If you remember, there was a game where they chased 230 against South Africa. They had one anchor in their 11. They had Joe Root playing the anchor role pretty well, must be said. But everyone else around him was a hitter, right? So yes, this is a philosophy that England has embraced after that 2015 World Cup, as you mentioned. उस वर्ल्ड कप में इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ गेम अगेंस्ट स्कॉटलैंड वेयर इट फेल्ट लाइक इंग्लैंड वर प्लेइंग 90s version of one day cricket, right? Like I was at that score match. I 180. remember. I can imagine, right? And yeah, that they lost to Bangladesh in the quarterfinals, and I think it helped them that Owen Morgan was around in 2015 when things went south, because he knew exactly what they had to change, right? And yeah, I mean, the way they've embraced that philosophy, some would say at the cost of their test cricket, which again now is probably on the upswing with baseball coming into play. And I think people ask Rahul Dravid the same question a couple of days back, right? What should India do in order to get better at T20 cricket? Should we send our players to foreign leagues, etc.? And Dravid's response was pretty measured, right? He said it comes at the cost of putting your first class cricket and your test cricket at risk. So it's something for India to think about there. But yeah, no doubts that England have embraced this philosophy over the last 5-6 years, and they just stayed true to it. Interesting point here. Let me put up another poll for our viewers. दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ये पोल है, who are the favorites today? Is it Pakistan or England? We've had some fascinating views on both sides. Very, very tough to say कौन winner है, कि एक तरफ जैसे कि नितिन ने कहा था, there is nature, on the other side there is nurture. Manvinder has also addressed the fact कि 5 साल 6 साल के अंदर जो बदलाव इस टीम ने किया to get to the 2016 World Cup final, to get to the semi-finals of last year T20 World Cup, and then to win that 2019 One Day World Cup. बहुत सारे signs हैं कि हाँ, this is the most well planned, most calculated white ball team going around. We have 5 seconds left on the clock, and then I'll get into my favorite section of this show here. Maninder के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई वो क्विज के बारे में सुन के. 43% are saying Pakistan. Resounding 56% are saying England. Okay, let's see where it goes. A lot of logic does go out the window when these things happen. Let's quickly move into our next section, which is called the quiz section. Hopefully, I get it right. Saurabh, where are you? ये भी कुदरत का निजाम है that you're getting the segments wrong. नहीं, ये भी गड़बड़ है सब यार.
I've added some picture. Anyways, the point is, you guys know the section. I know that sometime I'm gonna choke like South Africa and maybe India. Some will say. और देखिए ये आज ही हो गया ये कि जैसे मैंने कुछ और फोटोज डाले ग्लांस के बैक एंड पे मेरा पूरा स्केड्यूल खराब हो गया. But चलिए, let's get into the quiz section. Viewers, you have the option of answering on your lock screens. Once again, you get 20 seconds to Manvinder and Nitin. I will ask the question straight up front. First question coming up here on your lock screens. It's a true or false question. It is England won four consecutive T20 series in a row against Pakistan between 2010 and 2015-16. Is this true or is this false? Anyone can answer until the viewers cast their votes. True. You're going with true? Okay. They played a lot of cricket. I think no team, maybe India, Sri Lanka के बाद ये दोनों team सबसे ज्यादा खेल चुकी है T20 series. True or false, Maninder? 2010 और 15-16 के बीच में चार लगातार सीरीज across different countries. Give you a hint, that time also पाकिस्तान का home was also in the UAE. वहां बहुत खेले. क्या ये सच है कि they won four series in a row against Pakistan across 5.5 years? I will go with Nitin. True. You are going with Nitin. Okay. It seems like the viewers, unfortunately, have not gone with Nitin. They've actually gone 45% true and 55% false. The answer is yes, it is true. They won four series in those 5 years across venues. And I think that's also where they learned a lot. UAE में जाके जीतना बहुत बहुत बड़ी achievement होती है. I Next vaguely question. remember I vaguely remember Peterson doing well in UAE in one of those series, right? And that's why I went with Pakistan as one. It was also a tough time for Pakistan cricket, right, after spot fixing and all of that. So yeah. And then to be uprooted and to go there trying so many players, but they actually did end up with a very good record in the UAE, their home away from home. दूसरा सवाल, Owen Morgan is England's leading run getter versus Pakistan in T20s. Who is second? Is it David Malan, who's not playing this match, or is it the man that Nitin just referenced, who did play a fair amount of cricket against Pakistan, Kevin Peterson? Second highest run getter, दोस्तों. आपके पास 20 सेकंड है आपके लॉक स्क्रीन पर. After Morgan, who has the most runs? Is it David Malan or Kevin Peterson? I'll go with Peterson again. कुछ तो चल रहा Okay, है. चल रहा है. Okay, ठीक है, सही है. कुदरत I का will go निजाम with चल रहा है, चल रहा है. Malan. You're going with Malan? Okay, let's see what the viewers have said. Pretty close. 54% have gone with recency bias. David Malan. 46% have gone with Kevin Peterson. The right answer is Kevin Peterson. Not by a lot margin, but yes, it is actually Peterson. हालांकि बहुत साल से वो नहीं खेले, but like I just said, जब तक वो थे इन दोनों टीम ने इतने मैचेस खेले 2006 से लेकर 2015 तक, it actually is Kevin Peterson with 348. Malan has 291. So the difference is not, and he's played less matches than Peterson also. So next time I'm going with Nitin only. यही है. So he's been well taught at the in the corridors of Crick Info all those years ago. That's why I'm Absolutely, saying ना yes. कि अब जो नितिन बोलेगा वही मैं बोलता हूँ. चलिए 2021 में किस इंग्लैंड बल्लेबाज ने 42 बॉल्स के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी मारा? लियम लिविंगस्टन और मोइन अली? Wow. Was it Livingston? If you're saying that, I will accept that as your, should I say, guesstimate. मैं भी Yeah, लिविंगस्टन ही सोच रहा there's हूँ. so. चलिए व्यूअर्स, आपके पास 7 सेकंड है. 6, 5, 4, कुछ 50, तो कमाल किया 50. था लिविंगस्टन ने. 3, 2, 1. Viewers have gone with very, very close. 49%. No, it's actually split down the middle. No one is quite sure. 50-50. The right answer is Liam Livingston. Moeen did get 100 of about the same, but that was before. It's actually Liam Livingston. That was the year which ECB said, Bhaiya, aaja wapas. Let's see what you have. And in one of his earliest innings, shortly after the COVID restrictions were lifted, he got 100 off 42 balls. They Yeah. lost that match, but us match, it underlined what this guy had to give to England cricket. Chaliye. Who is the only England bowler to take 4 wickets in an innings against Pakistan? Is it Adil Rashid or Tim Bresnan? I can tell you 11 different England bowlers have taken 300 innings. Only one has taken four. Is it Adil Rashid or Tim Bresnan? आदिल I will रशीद. go with
बोल दिया, he's not winning to Nitin, ठीक बोल है. दिया जो होगा King of देखा front foot. जाएगा. मुझे पता नहीं है कि तुक्का मार रहा हूँ, बट आई विल गो विथ Bresnan simply because what is Bresnan doing in this quiz? I mean, if he is in this quiz, it's probably because he's the right answer. So, yeah. Or I just threw in a total random name as well, Nitin. You never know. The right answer is actually Adil Rashid. Ah, well done, Jamie. Right. And So well look, done, but Manvinder अच्छा ji. है, वही है. There were 11 bowlers who took 3. I said, यार, of all these names, this guy, ये डालूंगा तो लोग बोलेंगे, ये साला कुछ तो किया होगा Tim Preston ने at some point. वही हुआ है. वही है. नितिन मैं समझ चुका हूँ जेबी क्योंकि कुछ भी हो सकता है. ये तो Adil सही है. Rashid, 4 for 35. Chaliye, this is good fun. Last one, इसी साल, the 7-match series which Nitin referenced, as well as with the 3D angle of Ramesh Raja, it was won by England 4-3. Very, very competitive mostly. In one match, Pakistan leveled the series with a 10-wicket win. Was the target that day? Oh, I put the wrong. Hey, हो गया मुझसे आज गलती. The question ये था, was the target 200 or 2004? I brought the wrong poll up. I'll bring it up again for our viewers. In the meantime, was the target 200 or was it 204? I'll let you guys decide about that, and then I'll bring up the poll again. आज सौरभ पंत नहीं है तो मेरा पूरा change हो गया game plan. 200,000. Okay, that's said with a very very confident 200. जितना कॉन्फिडेंस नितिन ने बोला ना मैं भी बोल रहा हूँ 200. Viewers, I'm gonna bring it ऐसे up ही for बोल रहा हूँ, you. पता नहीं. Yours, Nitin and Manvinder have fairly confidently said 200. Manvinder has very confidently copied. So Nitin has said 200. I know the answer. आपके पास 20 सेकंड है. It was a fantastic series where both Babar Azam and Mohammad Rizwan really dominated. Rizwan was number one until recently. That was when Babar was scoring a lot of runs. Then Babar went and shook hands with Virat Kohli in the Asia Cup, and the runs got transferred. But Babar will say, "Boss, come the big day, I got a 50 in the semi-final, और मेरी team आज final में है." Viewers are not sure. They've not been watching very closely the confidence with which Nitin is giving his answers. They've gone 50-50. बिल्कुल सही जवाब. दो so was the target that day for that team. And again, it was a great series. I watched about half it because one day England would win, second day Pakistan would smash them, then third match Pakistan would choke, and England. It was a fantastic series. But what happened several months ago on those flat wickets, I think has no bearing on आज पे क्या होगा. So we just go back to the एक चीज सीख लिया मैंने. नेक्स्ट टाइम जब भी हम शो करेंगे और क्विज पूछोगे तो मेरे फोन है फ्रेंड नितिन होंगे. we'll do this. We'll do this. We'll give you that liberty. I want to talk briefly because it was predicted that 95% rain है. कल भी है. So far, what the visuals I'm seeing, it's pretty clear. मानता हूँ कि forecast is more for their evening, but let's just hope that we get a full match. I didn't ask for the toss time, but both teams are unchanged. आप दोनों को शायद कोई हैरानी इस बात में नहीं होगी कि the teams have gone for the same 11, right? नहीं ऑब्वियसली अगर आप उसी कॉम्बिनेशन से जीतते आए ना तो कोई मैं तो वर्ल्ड कप से स्टार्टिंग से ही बात बोल रहा हूँ कि आपको वर्ल्ड कप में पता होना चाहिए कि आपके किस टीम में क्या बैलेंस लेके आते हैं. आप एक आधा प्लेयर विकेट देख के ग्राउंड की डायमेंशंस देख के आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उसके अलावा मुझे लगता है कि चेंजेस करने नहीं चाहिए. आप वही जो आपकी 11-12 खिलाड़ी हैं उनको बैक करना ज़रूरी है. और जब उन्हीं खिलाड़ी को आप सेमीफाइनल मैच इतने कन्विंसिंगली जीते तो किस लिए फाइनल में आके चेंज करना है. अगर कोई इंजरी नहीं है लाइक मार्कपुट को देखा कि उन्होंने सेमीफाइनल मिस किया था बिकॉज ऑफ इंजरी, तो अगर ऐसा कोई रीज़न नहीं है इस मैच में, अगर मार्कपुट फिट होते वो जॉर्डन की जगह आते तो समझ में आता था. अदरवाइज आई थिंक सारी टीम्स कोई भी क्रूशल मैच के अंदर कभी भी चेंजेस करना पसंद नहीं करेंगी. I'm gonna quickly bring in. This time I know I got the right AV because it was the last one I added. This is our fantasy section sponsored by High Five. Nitin, इसमें क्या होता है? I will ask you three players from a fantasy perspective who you think will net our viewers the most views. Let's see. I know Nitin at one stage was into fantasy because we had these pools going on back in the cricket for days. I'm not sure whether you still do it, Nitin, but if you have a sense of it, give me three names. They can all be from one team. They can be split. Who you think would net any of our fantasy enthusiasts watching this show the maximum points? I do still play fantasy, not very well, I must say. So please take my predictions with a pinch of salt. So far, I will go with so far. Shadab because he's my favorite player on the Pakistan team. I'll go with Shaheen because 1992. I'm waiting for that over in the middle of the day, and I'll go with Josh Butler. Very very good pick. Shalab is my captain and Butler is my vice captain. Maninder, आप बताइए.
Uh, Butler captain, Shadab second, and Hmm. third one I will go with Stokes. स्टोक्स इंटरेस्टिंग, आई हैड, मैंने स्टोक्स को इस पूरे इंग्लैंड कैंपेन में मैंने स्टोक्स को लिया नहीं, बट समहाउ फॉर द सेमीफाइनल आई सेड ये कुछ करेगा, तो मैंने उन्हें वाइस कैप्टन बनाया. ही डिडंट गेट टू बैट दैट डे, बट बात वही है, इट इज स्टोक्स व्हाइल ही इज probably the weakest in this format right now because it Stokes. Kabhi bhi, he opens the bowling, he bowls one over beach mein, and he when he bats at four, I like to have players who bat at four at least a vice captain option. But I think we're all on the same page. Agar Josh Butler ne power play par kiya, there's only one opener in world cricket who you would expect to go on and dominate, and that would be Josh Butler. So I'm not surprised that you both have Josh Butler. I have him as my vice captain. Keeping the karte hain. But Jamie, I think one point, Ben Stokes is like the Forrest Gump of world cricket, right? आज final है. You go back to the 2019 final, he was there in the last moments. You go back to the 2016 final, he was again involved. So Ben Stokes will be in the thick of action today. I know he's not had a great tournament, he's not really had much to do, but आज Yeah, yeah. मुझे लग रहा है come last over, Stokes will be the guy. So maybe I should make him my vice captain. But वही है, अगर bowling पिट गया और बैटिंग नहीं आया, खैर आज तो अगेंस्ट पाकिस्तान बैटिंग आएगा वैसे. हाँ, आएगा शायद. आएगा Yeah. आएगा आएगा. चलिए, let's now move into our final section here. This is called predictionary, and I'll get your views as well as the views of our viewers. Prediction. Nitin, I know you also had to drop out early. So if you have to go, please just give your views and drop off if you need to go. Otherwise, stick around for 5 minutes. Sure, yeah, I will. I need the total that Pakistan will make, and if they win or lose, the margin of England. Pakistan to make 168 runs and to Give me a win second. by 7 runs. You are saying Pakistan, oh, sorry, 160, 168. 168, and England? Pakistan wins by 7 runs. So England 7 runs. See, 161. got it. That's a ripper, no matter how you look at it. मनिंदर, आप बताइए, आपने कहा था कि आपको क्लोज मैच चाहिए, तो उसी लिहाज से अपना स्कोर बताइए आप. One final time on T20 Adda. We've both been hit or miss throughout the whole tournament. Pakistan 140, अच्छा. England winning by 5 wickets in last over. 5 wickets. Okay, very, very contrasting things here. Yeah, I had somehow when I was making my thing, I thought England would bat first. तो मैंने 180 के आसपास किया था. Um, yeah, you said 140, you said 168. मैं जो भी कहूंगा वो नहीं होगा. I'm going to go with I'm going to go with 158. Let's say 158. And despite that feeling of Shaheen Shah really bowling two guys, I'm just going to go with what Nitin just said. It's funny how you make predictions, but someone says something with such confidence, okay, it goes out the window. I'm saying Stokes is going to be hanging around and England are going to win by 4 wickets. Who knows? He I'm going might to have a super over. Yeah, no, we've got this far without one. We don't need one, especially England again. Yeah, because they have a habit of taking these blooming super overs. But I'm gonna cut this clip and I'm gonna put it out at some point during the match, and we'll see how close we all are. Nitin, good to see you again after 3 years. We met at the last World Cup. Pakistan was Yes. playing that day as well. Pakistan Bangladesh ka match Yes. tha Lords mein. Thanks for taking Shaheen our got time. 6 wickets. Shaheen got 6 wickets on that day. बताइए बताइए. Good to see you, Nitin. Thank you for taking our time. Manvinder, it's been a pleasure throughout this T20 World Cup having you on the show. We wish you both the best. Who knows? We might get together to talk cricket some other day. Thank you to all the viewers as well who cast their votes. Let's have a good Sunday, and to use that cliche Ravi Shastri, let cricket be the winner. Thank you, gentlemen. Thank you, Thank you Nitin. so Bye much, bye. Jamie. Bye, Thank you, Jamie. sir. Bye, Yes. guys. Bye bye. Bye.